Yes, we are live. Thank you so much, sir. Greetings to all the esteemed participants in this crucial national lecture series focused on the national education policy, a way to quality education. I'm Dr. Abha Dubey, serving here as the Vice Principal, and it is with immense pleasure that I extend a heartfelt welcome to each of you. Today, we have the privilege of hosting two distinguished guests, Honorable Dr. Prashant Srivastava, sir, Dean of Student Welfare at Hemchand Yadav Vishwavidyalaya, Durg, as our chief guest. For today, and Honorable Professor Hrushikesh Senapaty, our keynote speaker for the day. Professor Senapaty is a former director of NCERT and a prominent academic figure. A warm welcome is also extended to Mr. Harjit Singh Hura sir, our esteemed secretary, as well as our principal, Honorable Dr. Arun Kumar Dubey sir. We deeply appreciate the presence of all the delegates joining us from various corners of India. It is indeed a pleasure to have over 600, about 700 distinguished individuals representing almost every state in India participating in this event. Our 4-day lecture series, which commenced on October 16th, began with an overview of the national education policy by the Honorable Dr. Ramesh Chandraji Kothari. Then Professor M.A. Khadar provided critical insights into NEP 2020 on 17th, while Professor Taruna Chaudhary Dhal discussed a behavioral approach to NEP yesterday. Today, we are fortunate to have Professor Dr. Hrushikesh Senapaty sir, an expert in the field, who will shed light on the national education policy with a specific focus on curriculum, pedagogy, and assessment. This lecture series is designed to help the entire academia to gain a deeper understanding of national education policy and as well as the implementation, ways of implementation effectively. On behalf of entire Columbia family, I extend a warm and sincere welcome to each and every one of you, and we are eagerly anticipate engaging in enlightening and insightful discussion throughout this event. I welcome you all once again. Now I kindly request Principal Sir to extend a warm welcome and deliver the welcome address. Principal Sir, please. Good morning, everyone. I am delighted to extend a heartfelt welcome to each and everyone. We gathered today here for eagerly awaited national lecture series on the National Education Policy 2020. I would like to begin by extending a warm welcome to our chief guest, today's chief guest, Dr. Prashant Srivastava sir. He holds the esteemed position in Dean of Student Welfare at Hemchand Vishwavidyalaya University, Vishwavidyalaya Durg, Chhattisgarh. We are also honored to have with us distinguished keynote speaker, Professor Hrushikesh Senapaty sir, who is former professor at NCERT and now he is professor in RI Bhubaneswar. His presence is truly appreciated. Furthermore, I would like to extend my sincere and warm welcome to Mr. Harjit Singh Hura sir, who is Secretary of our Jan Pragati Education Society. I extend my heartfelt greetings to all the participants, including academicians, professors, research scholars, and dear students who have been actively involved in our pursuit of the program's objectives. Our focus today is on comprehending the various decisions of NEP 2020, its associated challenges, and exploring pathways for its successful implementation. We will delve into the adaptation of curriculum, pedagogy, and assessment methodologies in alignment with the principles of NEP 2020. Today's session promises to shed new light on these topics, fostering fresh insights. Hope you will get productive and enlightenment day ahead. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, sir. Now I kindly request Honorable Harjit Singh Hura sir for his address.
Good morning, everyone. Today's this valedictory program's chief guest, Dr. Prashant Srivastava, sir, the respected Dean, Student Welfare, respected Hemchand Yadav ji, Vishwavidyalaya, Durg, Dr. Arun Dubey ji, Principal, Columbia College, Dr. Abha Dubey ji, Vice Principal, Dr. Neelam Arora ma'am, respected faculty members, respected Dr. Senapaty ji, who will be joining shortly, and all the delegates who have joined this morning. First of all, I would like to congratulate Dr. Dubey ji and his team for organizing such an contemporary topic workshop and lecture series. For last 3 days, I am seeing that very respected and valuable speakers and resources of our region and from other states also people are joining, and they are sharing their knowledge and experiences with our delegates and teachers. I'm very much delighted, and I feel very grateful to them for sparing their valuable time and sharing their valuable knowledge. I would like to say that in our Columbia group of institution, as per new education policy, we are very much committed to provide quality education to our students from all across the states we are getting. And we are very much we have a very nice team of faculty members in all our groups, and we are providing quality education right from nursery up to PhD in pharmacy and higher education and B.Ed. And we are proud to have very rich resources with us, and which are very much committed for the development of our students. We are organizing such workshop and seminars very regularly for the benefits of our students, and we are committed to organize such type of programs in every field, in academic, in co-curricular, in social, sports, cultural, so that our students, those who spare their time, whether it is 2 years or 3 years or 4 years, whatever the duration of course is, we try to provide them every type of academic, co-curricular, so that their knowledge, skill, and personality gets developed there, and they are very much prepared for their bright future and to serve our society and as well as mankind to their best. So I once again congratulate and thank Dr. Dubey and his team for organizing such a nice lecture series on this new education policy, which is very much required for the students of B.Ed and D.L.Ed, because they are going to make their career, and they should know each and every aspect of NEP. I am thankful to all the resource persons who have joined and spared their valuable time in this lecture series. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, sir. I'm very pleased to introduce Dr. Prashant Srivastava, sir, a well-known personality and figure of Chhattisgarh state. Sir is MSc Geology with first division in merit from Pandit Ravi Shankar Shukla University in the year 1989. His MPhil Geology with first division in merit from Pandit Ravi Shankar Shukla University in 1990.
He got PhD in 1999 from the same university. He received DST Young Scientist Award in 1995. He is the recipient of Commonwealth Academic Staff Fellowship in the year 2008. He received UGC Postdoctorate Research Award in 2009. He was selected for US-India Fulbright Visiting Lecturer Fellowship in 2009. Under this tenure of this fellowship, he visited USA for 6 months and delivered his lecture in 12 American universities, including Purdue University, University of California, University of San Francisco, University of Illinois, Chicago, Texas University, University of Portland, Indiana University, and so on. He delivered invited talk in Geological Society of America also. He visited visiting professor of DST, New Delhi. He presented invited talks in IIT Mumbai, Presidency College, Kolkata, IIM Lucknow, Indian Forestry Research Institute, and Miranda House, New Delhi. He is also the Chhattisgarh State Mentor for NEP accreditation nominated by Chhattisgarh government. He authored 2 books focused on environmental conservation. He published more than 40 research papers in national and international research journals. He received Rajiv Gandhi Excellence Award in 2013. He is expert member of various organizations like UPSC, MPPSC, Central Pollution Control Board, Indian Railways, etc. He is member of editorial board of 2 international research journals. He completed 2 major and 3 minor research projects. He received Best Teacher Award 2020 from Institute of Scholars, Bengaluru. This is the very concise journey of his academic career. Apart from this, sir is very generous and very ready to provide us his guidance for the qualitative improvement of education as well as our personal behavior. Thank you so much, sir, for joining us in this very pivotal national lecture series. Thank you so much, sir. Or I invite you for your address. Thank you so much, Dr. Abha. Respected हरजीत सिंह हुरा साहब, मैंने नाम बहुत सुना था, आज सर के दर्शन हो गए, तो मैं इसके लिए सबसे पहले तो डॉक्टर दुबे और आभा मैडम दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि बहुत जगहों पे नाम आता था कि भाई कोलंबिया के हुरा साहब ने ऐसा कहा, हुरा साहब ने नई पॉलिसी, तो मैं सोचता था कि कौन ऐसे सज्जन है जो इतना पॉजिटिव वर्क करते हैं, मेरे से कभी भेंट नहीं हो पाई, तो आई एम फॉर्चुनेट. सो लॉट ऑफ थैंक्स टू डॉक्टर अरुण दुबे for giving me this opportunity, and Abha Dubey madam also. Respected Dr. Dubey and the learned fraternity members of the Columbia Institute, or Hrushikesh Senapaty ji shayad abhi judenge. He is also a very good speaker. I heard him once, and he is a very good speaker. So sabse pehle to I congratulate Hura sir and all the members of the Columbia Institute that you have organized such a wonderful series of lecture on the national education policy. It is a very relevant topic because it is a need of the hour. लोग समझते नहीं कि क्या है, बहुत सारे लोग उस पर टिप्पणी करने लगते हैं, बहुत सारे लोग जो है उसको आधा समझते हैं, आधा नहीं समझते हैं, फिर कहते हैं कि इट इज वेरी डिफिकल्ट, या उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो हाफ हार्टेडली इम्प्लीमेंट करते हैं. अभी जैसे होरा सर ने जो कहा मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई हमारे कोलंबिया इंस्टीट्यूट में हम लोग जो है वो प्रयास कर रहे हैं, और हमारी फ्रेटर्निटी जो इतनी लर्नेड फ्रेटर्निटी है उसकी सहायता से हम ग्रुप में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे. एक बहुत अच्छी बात है. अदरवाइज मैंने देखा कि बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, पर्टिकुलरली दी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, दे ऑलवेज डिनाइड और दे हेजिटेट कि हम कैसे कर पाएंगे, इसमें पैसे खर्चे होंगे, फैकल्टी का रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स. तो ऑलवेज दे वो टाइम लिंगर ऑन करते हैं कि भाई इसको अभी थोड़ा पेंडिंग में रखिए. बट होरा जी ने जो दिलेरी दिखाई है कि यस वी विल इम्प्लीमेंट, रियली आई अप्रिशिएट, और मैं उनके लिए उनको और उनकी पूरी टीम को बधाई दूंगा कि कम से कम आप
मादा तो रखते हैं उसको लागू करने का, क्योंकि आपने देखा है एज फार एज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज कंसर्न्ड देयर आर सो मेनी चेंजेस which we have never seen before in during our all part of life. जैसे मेरे 50 साल से ज्यादा का मैं हो गया, लेकिन इतने सारे जो नए चेंजेस आए तो हमको एक्सेप्ट करने में इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हमारा जो माइंडसेट है वो माइंडसेट वैसे ही बना हुआ है। यदि कोई कॉमर्स का लड़का बोलता है कि सर मैं बायोटेक्नोलॉजी भी पढ़ना चाहता हूँ या म्यूजिक पढ़ना चाहता हूँ, तो हम लोग पहले उसको डांट के भगा देते थे कि तुमको म्यूजिक में इंटरेस्ट था तो व्हाई यू हैव नॉट टेकन एडमिशन इन द म्यूजिक, और बायोटेक्नोलॉजी में था तो यू हैव टू टेक साइंस। अब ले लियो कॉमर्स पढ़ना चाहते हो बायोटेक्नोलॉजी या म्यूजिक, तो हम लोग उसको उस तरीके से डिस्करेज करते थे। बट एज फार एज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज कंसर्न, आप देखिए उसमें ये प्रोविजन है कि अपने विश के हिसाब से स्टूडेंट जो है जो जैसा पढ़ना चाहते हैं वो वैसा सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। जब व्हेन आई विजिटेड यूनाइटेड स्टेट्स, मैंने वहां देखा था कि वहां स्टूडेंट जो है वो अपने हिसाब से सब्जेक्ट्स लेते थे, और उनका एक बहुत अच्छा सिस्टम था कि अभी जैसे आपके कोलंबिया कॉलेज, तो कोई जरूरी नहीं कि हर सब्जेक्ट आपके कॉलेज में हो, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि उतनी फैकल्टी चाहिए, उतनी फैसिलिटीज चाहिए, लेबोरेटरीज चाहिए। तो उनका क्या होता था कि जो कोलैबोरेशन, जो कोलैबोरेटिव शब्द का इस्तेमाल वो लोग करते हैं, वो कोलैबोरेशन की शुरुआत इसी से हुई कि यदि आपके यहाँ जैसे मान लीजिए म्यूजिक नहीं है, लेकिन रायपुर के किसी दूसरे कॉलेज में म्यूजिक है, तो आपके साथ उनका कोलैबोरेशन है और आपका बच्चा म्यूजिक की क्लास उस पर्टिकुलर मान लीजिए श्री राम संगीत महाविद्यालय, तो वहां पर वो अटेंड करता है, और वो लोग जो परीक्षा लेते हैं, जो मार्क्स उसको अलॉट करते हैं, वो यहाँ पर एकेडमिक क्रेडिट के रूप में आपके कॉलेज में आकर के जुड़ जाता है। तो आपके यहाँ यदि मान लीजिए वो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहा है, तो आपने उसकी फिजिक्स केमिस्ट्री की परीक्षा ले ली, क्लास ले ली, म्यूजिक चूंकि आपके यहाँ नहीं है तो वो वहां से पढ़ के आ जाएगा, दोनों मार्क्स उसके क्लब हो जाते हैं, और क्लब होने के बाद वो बच्चा वो डिग्री डिप्लोमा जो भी देना है वो दिया जा सकता है। तो इट इज अ वेरी गुड स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच, और इस स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच में आप देखिएगा कि जो यदि आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का पूरा वो आप मसौदा पढ़ेंगे, इट इज ऑफ 842 पेजेस, तो उसमें जो मेन एम्फेसिस दिया गया है कि प्रिपरेशन ऑफ ए मैन टू फेस द 21st सेंचुरी। अभी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आप देखिए कि वो दिशाहीन है, दे डोंट हैव एनी कंक्रीट आइडिया अबाउट व्हाट दे हैव टू डू। कि बहुत सारे लोग, इसमें हम लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं, वो लोग सेल्फ भी रिस्पॉन्सिबल है। जैसे आप देखिएगा, आप मेरी बात से हो सकता है सहमत हो या ना हो, मान लीजिए अपनी बच्ची है, उसने बीए कर लिया, वो एमए करना चाहती, अब वो बोलती है कि मैं कोलंबिया इंस्टीट्यूट जाऊंगी। अब वो कोलंबिया इंस्टीट्यूट चूंकि शहर से थोड़ा सा दूर है, तो हम क्या बोलते नहीं, तुम दुर्गा कॉलेज में पढ़ो या तुम फलाने कॉलेज में पढ़ो, वहाँ ऑटो भी मिल जाता है, सब मिल जाता है। तुम्हारी सहेलियां कहाँ जा रही हैं, तो भाई हमारी 4 सहेलियां फलाने कॉलेज, हाँ तो तुम भी वहीं जाओ, वो कोलंबिया नहीं जाना। बट कोलंबिया इंस्टीट्यूट है पोटेंशियल, वहां अच्छी फैसिलिटी है, अच्छी पढ़ाई हो रही है, अच्छी फैकल्टी है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि वहां से ऑटो मिल जाता है। आप देखिए, एंड हम उसको पोस्ट करते हैं, बच्चे के ऊपर इम्पोज करते हैं कि नहीं तुमको वहीं पढ़ना है। अल्टीमेटली वो बेचारी मन में सोच के शहर के किसी कॉलेज में एडमिशन ले। मैं नहीं बोल रहा कि शहर के कॉलेज खराब है, लेकिन हमको उसको फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहिए कि जहां वो फ्लेक्सिबल है, जहां उसको अच्छी फैसिलिटी है, वहां पर पढ़ने दे। दूसरा, आप सिक्के का दूसरा पहलू देखेंगे तो आप देखिएगा कि हमारे जो स्टूडेंट्स भी है, वो एडमिशन अपने चॉइस के हिसाब से नहीं लेते, वो अपने फ्रेंड्स को देख के एडमिशन लेते हैं। इट इज ट्रू, बिकॉज इन द हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी आई एम डीलिंग विद 2 लाख स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ 2,16,000 स्टूडेंट है। तो मैं देखता हूँ कि भाई आपने क्यों एडमिशन लिया, तो सर हमारा दोस्त भी वहीं ले रहा था, या मेरी सहेली भी वहीं एडमिशन ले रही थी इसलिए मैंने ले लिया। मेरी सहेली बीकॉम में ले रही थी तो मैं भी बीकॉम में ले ली, भले मैं साइंस में कितना भी स्ट्रांग हूँ। तो ये जो हमारी अप्रोच है, बड़ी कैजुअल अप्रोच, वी हैव टू स्टिक अबाउट अवर एबिलिटी कि हम क्या कर सकते हैं। यदि मैं साइंस में अच्छा कर सकता हूँ तो दुनिया के किसी भी कॉलेज में मैं एडमिशन लूँ, मैं अच्छा ही करूंगा, क्योंकि मेरे में पोटेंशियल है। लेकिन मैं वो नहीं देखता, मैं सहेली देख रहा हूँ, घर वाले ऑटो देख रहे हैं, इस हिसाब से हमारे आजकल के एडमिशन होते। दूसरा, एक और चीज आप देखेंगे, पर्टिकुलरली इन द केस ऑफ गर्ल्स, आप देखिए कि उन्होंने बीए कर लिया, फिर शादी नहीं जमी तो घर वालों ने कहा चलो एमए कर लो, एमए हो गया एमफिल कर लो, अब एमफिल हो गया तो अब क्या करें, अभी भी शादी नहीं जम रही है तो पीएचडी कर लो, या शादी हो गई तो हस्बैंड ने कहा कि भाई खाली बैठी रहती हो पीएचडी कर लो, तो वो खाली बैठी थी तो पीएचडी करने आ गए। अब देखिए इस टाइप का जो अपना एजुकेशन, इट इज एमलेस एजुकेशन, दे डोंट हैव एनी इंटरेस्ट।
क्योंकि अब किसी ने कह दिया तो अपन ने कर लिया, अदरवाइज हमारा तो कोई मन ही नहीं था। तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इन सब चीजों को बहुत ध्यान में रखा गया है। जब हम लोग डेली मीटिंग्स में जाते हैं तो वहां में बातें, आपको लग रहा हो कि सर कैसी टाइप की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सब बातें वहां सेक्रेटरी लेवल के लोग भी डील करते हैं कि साहब आजकल ये देखने में आ रहा है, तो आप लोगों को इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रख करके किसी भी डिसीजन को लेना चाहिए, और ये बिल्कुल ट्रू है। दूसरा आप जो देखेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो बहुत अच्छी चीज है कि एक्सेस ऑफ एजुकेशन विदाउट बेस्ड ऑन द कास्ट, क्रीड, कलर, कोई भी उसमें कोई चीज का भेदभाव नहीं, सब किसी को एजुकेशन मिलना चाहिए, ये एक बहुत अच्छी बात है। तीसरी एक चीज जो उन्होंने रखी है कि नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क। नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क मीन्स कि पूरे देश में एक ही सिलेबस लागू होगा मैक्सिमम जगहों पे। अभी क्या होता है कि आपके यहाँ का बच्चा जैसे हमारे यहाँ आता है और आपने कोई नया कोर्स चलाया हुआ है तो हम लोग उसको बोलते हैं कि एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट बनाओ, पात्रता प्रमाण पत्र, क्योंकि आपके जो मार्किंग सिस्टम है वो हमारी मार्किंग सिस्टम से अलग है। या बच्चा मान लीजिए उड़ीसा से पढ़ के आ गया, अब उनके यहाँ, हमारे यहाँ 600 नंबर का फर्स्ट ईयर में बीएससी या बीकॉम या बीए में, उनके 800 नंबर का, तो हम कहते हैं नहीं हमारा तुम्हारा मैच नहीं होता, इसलिए तुमको एडमिशन नहीं मिलेगी। तो उस बच्चे की क्या गलती, वो उड़ीसा से पढ़ के आया, उसके फादर का ट्रांसफर हो गया एंड ही अराइव्ड टू दुर्ग, लेकिन अब हमने एडमिशन देने से मना कर दिया। तो इस टाइप की जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है उसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने कहा कि थ्रू आउट द कंट्री सब कुछ सेम होगा, ताकि एक बच्चा कहीं से कहीं भी, आप बताइए इंडिया में उसको एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो ये उसके लिए तो पूरे फ्यूचर के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इवन हम दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं दे रहे कि नहीं भाई वो आप तो फलानी यूनिवर्सिटी के हैं, आपको हम एडमिशन नहीं दे पाएंगे। तो ये जो छोटी छोटी प्रशासनिक तौर पे जो हर्डल्स थे उनको उस पर दूर किया गया है। दूसरा एक और चीज जो आप पढ़ेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कि मोटिवेट द यंगर जनरेशन फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। ये जो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस है ये बड़ा जरूरी है। आजकल आप देखिएगा कि हमारे स्टूडेंट्स में धैर्य की कमी, दे डोंट हैव ए पेशेंस, 5 मिनट उनमें पेशेंस नहीं है। इवन यू सी ऑल ऑफ देम हैव ए मोबाइल, और मोबाइल में यदि वो कुछ डाउनलोड करते हैं या मान लीजिए यूट्यूब में कुछ अपलोड कर रहे हैं, या उसमें वो जो गोला घूमता रहता है डाउनलोडिंग या अपलोडिंग के समय, यदि वो 1 मिनट हो जाता है तो ये बड़े बेचैन हो जाते हैं। दे डोंट हैव ए पेशेंस कि भाई जब तक वो पूरा अपलोड या डाउनलोड नहीं हो जाएगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप देखिएगा वो खिड़की के पास जाएंगे, दरवाजे के पास जाएंगे कि नेटवर्क मिल जाए और मुझे कैसे भी करके, वो 1 मिनट का भी जो पेशेंस है दे डोंट हैव। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर वेरी अनफॉर्चुनेट अबाउट द पेशेंस। ये जो एक चीज है ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। और दूसरी बात है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस में बड़ा अभाव है, ये लोग शांति के साथ एक दूसरे के साथ रह पाना इनके लिए बड़ा डिफिकल्ट है। एक कॉलेज वाला दूसरे कॉलेज के बच्चे को एक तरीके से एक राइवल टाइप का ट्रीट करता है कि अरे वो तो फलाने कॉलेज का। कभी आप देखिए जब हम लोग यूथ फेस्टिवल करवाते हैं या दूसरे फेस्टिवल, मान लीजिए दूसरे यूनिवर्सिटी की टीम आई, कॉलेज की टीम आई, तो ये लोग जस्ट लाइक ये दुश्मन टाइप का ट्रीट करते हैं, अरे वो तो कर्नाटक की टीम है, उसको बिल्कुल ये गुस्से से भरे रहेंगे, वो भी इनके साथ वैसे ही ट्रीट करेंगे। तो ये जो चीज है इसको अवॉइड करना बहुत जरूरी है, बिकॉज वी ऑल आर इंडियंस, वी ऑल आर सेम। तो ये एक बहुत बड़ी चीज जो है। दूसरी एक चीज जो आप देखेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, एस्टेब्लिशिंग नेटवर्क अरेंजमेंट बिटवीन द इंस्टीट्यूशनल इन द कंट्री एंड द पूल देयर रिसोर्सेज। ये एक बहुत अच्छी चीज उन्होंने इस पर लागू की है, जो कस्तूरी रंगन साहब का ये सुझाव था जिन्होंने ये फ्रेम की है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। होता क्या है कि कुछ बड़े कॉलेजेस में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत सारे अच्छे रिसोर्सेज है एंड दे आर कॉस्टली टू, बट ईच एंड एवरी कॉलेज दे डोंट हैव सच काइंड ऑफ फैसिलिटीज। तो अब की बार उन्होंने ये किया है कि जिसके यहाँ जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करे दूसरे को। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ दुर्ग साइंस कॉलेज को NEP में A+ ग्रेड मिला। इनके स्टाफ यदि आप देखेंगे तो 146 रेगुलर प्रोफेसर है, लेबोरेटरीज हैं उनके यहाँ, पूरे जो क्लास 3 क्लास 4 के एम्प्लॉइज हैं, जितनी लाइब्रेरी यदि आप देखेंगे तो वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरी ऑफ द छत्तीसगढ़, नॉट ओनली इन छत्तीसगढ़ बल्कि सेंट्रल इंडिया। यदि आप दुर्ग साइंस कॉलेज की लाइब्रेरी देख लें, ईच एंड एवरी फैसिलिटी, रिप्रोग्राफिक फैसिलिटी, इनफ्लिपनेट, आपका जितना दूसरी फैसिलिटीज हैं, उर्कुन सॉफ्टवेयर, प्लेजरिज्म फैसिलिटी, ईच एंड एवरी फैसिलिटी, पूरी कंप्यूटराइज्ड लाइब्रेरी। लेकिन उसका उपयोग केवल कौन कर पाता था? केवल साइंस कॉलेज दुर्ग के बच्चे, उनके प्रोफेसर और उनका स्टाफ। बगल में जो दूसरे कॉलेज के बच्चे हैं उनके पास उतनी फैसिलिटी नहीं है,
तो वो बेचारे उसका लाभ नहीं उठा पाते, जबकि फीस वो भी उतनी ही पटा रहे हैं जितने की उस साइंस कॉलेज के बच्चे पटा रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया कि पूल देयर रिसोर्सेज, यदि आपके पास कोई संसाधन है दूसरे के पास नहीं है तो आप उसको भी उपलब्ध कराइए। बड़े सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स हैं उनके पास रिसर्च के, दूसरे लोग अच्छे रिसर्च करना चाह रहे हैं पर उनके कॉलेज में फैसिलिटी नहीं है। तो ये जो पूल रिसोर्सेज है ये बहुत अच्छी बात है। यदि किसी कॉलेज में मान लीजिए कोई ऑडिटोरियम नहीं है, प्लेग्राउंड नहीं है, आपके पास है और उनको जरूरत है तो यू प्रोवाइड देयर। तो ये जो पूल रिसोर्सेज है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है कि सब लोग एक साथ बढ़े। ऐसा ना हो कि एक ही कॉलेज बहुत वेल इक्विप्ड होते जा रहा है और बाकी लोग जो है वो नहीं हो पा रहे हैं। एक बहुत अच्छा है। दूसरा ये है कि आप देखेंगे कि कंटिन्यूइंग एजुकेशन ऑफ देयर चॉइस, जो मैंने आपको बताया चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का, कि वो अपने हिसाब से पढ़ ले। इसमें एक और बड़ी अच्छी चीज है मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट, कि कितने भी बार, अभी हम लोगों के यहाँ यूनिवर्सिटी में क्या पैटर्न है, आपके यहाँ भी होगा वो पैटर्न, कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम उसके बाद उसकी वो डिग्री का जो वैधता है वो समाप्त हो जाती है। जैसे मान लीजिए कोई किसी ने बीएससी में एडमिशन लिया तो वो 5 साल तक पढ़ सकता है, जैसे वो सप्लीमेंट्री आई कुछ आई, गिरते पढ़ते वो 5 साल में बीएससी कर ले। ऐसा नहीं हो सकता है कि वो पढ़ाई छोड़ दिया फिर बिजनेस में चला गया, फिर शादी हो गई और उसके बाद अब 15 साल बाद आ रहा है कि मैं फिर बीएससी सेकंड ईयर करूंगा। शादी के पहले लड़कियों के साथ खासकर ऐसा होता है कि मान लीजिए वो सेकंड ईयर में थी, शादी हो गई, ससुराल चले गए, हस्बैंड ने सास ससुर ने मना कर दिया पढ़ने से, तो उनकी पढ़ाई अधूरी रह जाती। बाद में धीरे धीरे जब वो फैमिली में एडजस्ट हो जाती है बच्ची, थोड़ा सा हस्बैंड को मना लेगी, थोड़ा सा सास ससुर को मना लेगी, तो कहते हैं कि चलो ठीक है बच्चे बढ़ गए अब तुम पढ़ो। तो तब तक वो 10-12 ईयर्स का पीरियड पास हो जाता है, तो उसको फिर से नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ती है क्योंकि वो पुराना अभी के पैटर्न में समाप्त। लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में वो समाप्त नहीं होता, उसको स्टूडेंट को मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का ऑप्शन दिया गया, कितने भी बार वो पढ़ाई छोड़ सकता है और कितने भी बार वो अंदर आ सकता है। तो उसके लिए क्या है, उन्होंने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एबीसी जिसको कहा जाता है, वो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट स्थापना की बात की कि यदि मैंने आज फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया तो मेरे जो भी मार्क्स मैंने पाए, चाहे मैं फेल हुआ चाहे मैं पास हुआ, वो एक बैंक जैसा सुरक्षित रहे। अब मैंने बिजनेस शुरू कर दिया है या मैं दूसरी जगह चला गया और 15 साल बाद आके अब मैं कहता हूँ कि अरे मैं फिर से पढ़ूंगा, तो वो जो मैंने फर्स्ट ईयर के मेरे चाहे वो फेल वाले मार्क्स हो चाहे पास वाले हो, वो सुरक्षित रहेंगे और वो आगे से मैं सेकेंड ईयर से ज्वाइन कर पाऊंगा। तो ये जो फैसिलिटी है मल्टीपल एंट्री और एग्जिट की, दैट इज अ वेरी गुड फैसिलिटी पर्टिकुलरली फॉर द लेडीज एज वेल एज द अदर पर्संस हु आर एंगेज्ड इन द डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ लाइफ। कई बार आदमी जानबूझ के छोड़ देता है, कई बार आप देखें तो मजबूरी में छोड़ता है। तो ये जो चीजें हैं ये आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बहुत अच्छी चीजें हैं जो कि आपको आगे आने वाले समय में देखेंगे। छत्तीसगढ़ में अभी आप देखिए कि 8 ऑटोनॉमस कॉलेजेस में जो है वो इसको इम्प्लीमेंट किया गया है और इस इम्प्लीमेंटेशन के दौरान आप देखिए कि नेक्स्ट ईयर से ये सभी जगह लागू करने का सरकार जो है वो योजना बना रही है और दूसरे कॉलेजों में भी ये एक साथ लागू हो जाएगा। एक और नई चीज जो हम लोगों ने पहले नहीं देखी थी, इसमें 4 इयर्स का अंडर ग्रेजुएट का भी प्रोविजन किया है इन्होंने कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और जो चौथा साल होगा यदि कोई पढ़ना चाहता है, कंपल्सरी नहीं है, यदि आप 3 साल का बीए करना चाहते हैं तो 3 साल का बीए करिए, यदि 4 साल का बीए करना चाहते हैं तो उसमें आपको चौथे साल में रिसर्च से रिलेटेड एक्टिविटीज जो हैं वो रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटीज पढ़ाई जाएंगी, बताई जाएंगी। यदि आप 4 साल का अंडर ग्रेजुएट करते हैं तो आपको पीजी में केवल 1 साल पढ़ना पड़ेगा, मतलब टोटल समय आपका 5 ही साल लगेगा। और यदि आप 3 साल का करते हैं तो आपको 2 साल का पीजी करना पड़ेगा। यहाँ एक और अच्छी फैसिलिटी दी है कि मान लीजिए जैसे मैंने 1 साल पढ़ा, अब मेरी शादी हो गई, मैंने पढ़ाई छोड़ दी, तो अभी हम क्या कराते हैं, वो बच्चा कहीं कर ही रहता है, वो फेल कहलाता है, अरे फर्स्ट ईयर पढ़े कोई मतलब नहीं, हम लोग ऐसा बोलते हैं। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या है कि यदि मैंने बीए का फर्स्ट ईयर पढ़ा और छोड़ दिया तो मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ बीए, तो उसको मैं कहीं दिखाऊंगा तो सामने वाला जान जाएगा कि मैं 1 साल बीए पढ़ा हूं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज, यदि 2 साल पढ़ता हूं तो मुझे डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा और यदि 3 साल पढ़ता हूं तब मुझे बीए की डिग्री मिलेगी। अब लेकिन दिक्कत यहाँ पर आ रही है, जो आप लोगों ने जो सेमिनार रखा है, जो जिसके लिए मैं आपको कांग्रेचुलेट कर रहा हूं, कि जब आप धरातल पे आएंगे तो दिक्कत है।
अभी जितनी भी हमारी एजेंसीज हैं, चाहे बैंकिंग हो, LIC हो, रेलवे हो, जितनी हमारी नौकरियां निकलती हैं, उनमें उनका माइंड सेट अभी नहीं हुआ है। आप देखिए, आपकी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको लागू होकर 2 साल हो गए, 2020 से लागू है, अभी 23 आ गया। लेकिन आपने एक भी विज्ञापन ऐसा नहीं दिखा होगा जिसमें लिखा हो कि BA 1 वर्ष पढ़ा हो तो इसमें अप्लाई करने के लिए पात्र है, या BSc 2 साल पढ़ा हो तो यहाँ अप्लाई कर सकता है। ऐसा कहीं नहीं। वो क्या बोलते हैं कि आवेदक के पास स्नातक की उपाधि हो, he has a graduate degree, that is the requirement of any post or whatever it may be। तो अब आप देखिए कि जो हमारे नियोक्ता है, जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं, जो हमको नौकरी देती हैं, उनको ये मालूम ही नहीं है कि 1 साल वाला भी सर्टिफिकेट मिलता है, 2 साल वाला भी डिप्लोमा मिलता है। तो वो तो केवल बोलते हैं कि भाई आप या तो UG हो या तो PG हो। तो ऐसी कंडीशन में मेरे को जो आपने सर्टिफिकेट दिया 1 साल वाला या 2 साल का डिप्लोमा दिया, तो मैं उसको लेके कहाँ जाऊं? मेरे लिए तो ऐसा कोई जॉब निकलता ही नहीं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि पहले जो हमारी एजेंसीज है, चाहे वो PSC हो, दूसरी एजेंसीज हो, उनको हमको पहले अवगत कराना पड़ेगा कि भाई ऐसा भी हो रहा है कि कोई 1 साल पढ़ के आ रहा है तो उसको सर्टिफिकेट है, तो आप उसके लिए भी कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो प्रोवाइड कराइए। जो 2 साल का डिप्लोमा किया उसको प्रोवाइड कराइए। अभी किसी को आप बोलेंगे सर मैं 1 साल पढ़ा था, सर्टिफिकेट तो बोले पढ़ा था तो फेल हो गए, आज के हिसाब से तो वो कोई मतलब का नहीं। तो ये जो चीज है कि हमको अपना माइंडसेट भी करना है, प्लस जो हमारी सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसीज है उनका भी माइंडसेट क्लियर करना होगा। उनको भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज के बारे में पूरी एक एक बिंदु बताना पड़ेगा, क्योंकि जब आप 24 में देखिए एक बैच निकल जाएगा आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाला, और उसके बारे में दूसरे को मालूम ही नहीं है। तो जब दूसरे को मालूम ही नहीं है तो फिर उसका लाभ कैसे होगा? इट इज क्वेश्चन। दूसरी बात यह भी है कि आपने बोल दिया कि भाई वो बायोटेक्नोलॉजी, म्यूजिक इसके एक साथ पढ़ सकता है, लेकिन यहाँ तो ठीक है कि आपको श्री राम संगीत महाविद्यालय, कमला देवी संगीत महाविद्यालय रायपुर में, अब मैंने एडमिशन लिया गुंडरदेही में। अब गुंडरदेही में एक ही कॉलेज है, अब मैं पढ़ना चाहता हूँ बायोटेक्नोलॉजी, वहाँ बायोटेक्नोलॉजी नहीं है। मैं पढ़ना चाहता हूँ म्यूजिक, वहाँ म्यूजिक नहीं है। मैं पढ़ना चाहता हूँ हिस्ट्री, वहाँ हिस्ट्री नहीं है। तो ये जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ये तो मेरे लिए तो इसका कोई मतलब ही नहीं रहा। मेरे लिए वो चॉइस बेस्ड कहाँ हुई? मुझे जो चॉइस है वो चॉइस में तो एक भी सब्जेक्ट नहीं मिल रहा। तो मैं क्या करूंगा कि उस गुंडरदेही कॉलेज में, जो भी कॉलेज है, वहां पर जो विषय है उन्हीं में से मैं लेने के लिए बाध्य हूँ और उसी को मैं पढ़ूंगा। तो ये जो एक्चुअल इसका मोटो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, कि स्टूडेंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी हो, जैसा चाहे वो पढ़ ले, जितनी बार छोड़ दे, जितनी बार अंदर आ जाए, ये सब के लिए हमको बहुत प्लानिंग की आवश्यकता है। क्योंकि जैसे जितनी बार वो छोड़ रहा है तो यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को उसको रिकॉर्ड रखना है, जितनी बार वो अंदर आ रहा है उतनी बार उसका रिकॉर्ड रखना है। तो आप देखिए इट इज टू मच डाटा, यू हैव टू रेगुलेट ऑल द थिंग। अब आज आप हैं, आपने उसको रख लिया कि भाई प्रशांत श्रीवास्तव BA में फेल हो गए कोलंबिया कॉलेज से। अब मैं आ रहा हूँ 15 साल बाद, तो 15 साल बाद आप भी उस कॉलेज में नहीं है, कॉलेज का स्वरूप बदल गया है, उसके दूसरे कोर्सेज स्टार्ट हो गए हैं, पूरा प्रबंधन बदल गया है, सब कुछ। अब मैं बोलता हूँ कि साहब मैं तो 2023 में BA में फेल हुआ था, अब मैं उसमें पढ़ना चाहता हूँ, तो आप देखिए आई हैव टू फेस लॉट ऑफ डिफिकल्टीज। तो ये जो चीजें हैं इसको हमको प्रैक्टिकली हम उसको हाउ टू अप्लाई, इस विषय में सोचने की आवश्यकता है। और धीरे धीरे, लेकिन आप देखिएगा जब पूरा माइंडसेट हो जाएगा, गवर्नमेंट का भी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस का भी, स्टूडेंट्स का भी, एम्प्लॉयर्स का भी, तो वो धीरे धीरे इंप्लीमेंट हो। शुरू में कोई भी चीज हम लागू करते हैं तो ढेर सारी कठिनाइयां आती हैं, और उसके बाद आप देखिएगा कि वो धीरे धीरे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व होती जाती है। तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, जैसे हर चीज के सिक्के के 2 पहलू होते हैं, कि कुछ उसमें प्रोज एंड कॉन्स है, वही चीज इसमें भी है। लेकिन हमको हमेशा सिक्के का जो पॉजिटिव साइड है वो देखना चाहिए कि इतने सालों बाद, 86 के बाद जो है वो 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, बहुत सारे लोगों से कंसल्ट करके बनाई गई है, एक एक बिंदु का ध्यान रखा गया है। और जो सबसे अच्छी बात है, मैंने उसका पूरा पढ़ा है, कि बहुत सरल भाषा में। कभी कभी क्या होता है, आप देखेंगे कि डॉक्यूमेंट्स को यद्यपि, बट डिसाइड ऐसा लिखा रहता है, तो समझ ही में नहीं आता कि ये बोल क्या रहा है, पास बोल रहा है कि फेल बोल रहा है। जैसे आप देखिएगा कभी कभी जब डिसीजन आता है, अपन लोग केस लड़ते हैं, तो वो उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा रहता है कि आभा दुबे केस जीत गई, ये शब्द कहीं रहता ही नहीं। वो आपको वकील समझाता है कि अरे मैडम आप तो केस जीत गई, उसमें कहीं ऐसा लिखा ही नहीं। इतनी भाषा आप देखिएगा कभी जुडिशियरी की लैंग्वेज में, कि वो उनकी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है, तो उस लैंग्वेज में लिखा रहता है, वो वकील या वो बताता है कि अरे साहब आपको केस जीत गए। लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा। अपन चाहते हैं ना कि जैसे मार्कशीट में लिखा रहता है कि भाई
अब डॉक्टर आभा दुबे पास, सेकंड डिवीजन, फलाना 56% मार्क्स, तो वो हम घर में दिखाते हैं कि भाई मेरे 56% आए, मैं बीए हो गया। लेकिन वो उसमें समझ में नहीं आता, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव केस हार गए, ऐसा कहीं लिखा नहीं रहता। वो वकील बताता है कि साहब आप हार गए। ये जो चीज है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बहुत अच्छा है, कितने सिंप्लीफाई करके उन्होंने हर चीज को लिखा है कि एक आम आदमी भी उसको समझ सकता है। जैसे अभी आपके तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स, अभी सेनापति जी आने वाले हैं, वो आपको बहुत सारी जानकारी देंगे। कल भी बहुत अच्छे आप लोगों के लेक्चर्स हुए। पलटा मैडम उस दिन बता रही थी कि कोलंबिया में बड़े अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स को इन लोगों ने बुलाया है। अभी जब मैं ये आपके ज्वाइन करने से पहले मैडम के पास ही बैठा था, मैंने बताया कि अभी कोलंबिया में मुझे बोलना है, तो बोले अरे उन्हें बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और जो उनकी लिस्ट देखना, जो फैकल्टी मेंबर्स बुलाए हैं रिसोर्स पर्सन, दे आर वेरी गुड रिसोर्स पर्सन। तो मैडम वैसे किसी की जनरली एकदम ऐसे तारीफ करती नहीं है, जब कोई वास्तव में तारीफ के काबिल होता है तभी करती है, अदरवाइज वो चुप रहती है। तो यदि उन्होंने कहा है तो रियली आप लोग जो है वो बधाई के पात्र हैं। और मैं पूरा कोलंबिया इंस्टीट्यूट, उनके मैनेजमेंट, होरा साहब, हमारे अरुण दुबे तो हमारे मित्र हैं, तो उनकी तो खैर कोई बात ही नहीं है, आभा छोटी सिस्टर जैसे, तो ये सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और कंग्रेचुलेट करता हूँ कि कितने अच्छे विषय पे आपने जो है वो इनवाइटेड लेक्चर्स सबके रखे, और मुझे इसमें सहभागिता का जो अवसर प्रदान किया उसके लिए आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आगे भी आपके इंस्टीट्यूट में कोई भी एक्टिविटीज होती है, कोई भी पॉजिटिव होता है, और आपको हमारी हमारी यूनिवर्सिटी की किसी भी चीज की आवश्यकता होती है, तो हम लोग सदैव आपके लिए तैयार हैं। अभी आगे दशहरा आ रहा है, आज पंचमी है, तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, दशहरे की, दीपावली की। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। क्योंकि विश्वविद्यालय में अभी एक बैठक है, इसलिए मुझे जाना होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। Thank सर you, से sir. कल ही बात हुई मेरी, तो सर ने बताया एक मीटिंग है अब, तो सर ने फिर भी बहुत समय दिया, बहुत गहराइयों से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जो मेन की पॉइंट्स हैं उनको सर ने एक्सप्लेन किया, और बहुत ग्राउंड लेवल पे ले जाके, क्योंकि सर इन सारी चीजों को डील करते रहते हैं, तो उसको एक्सप्लेन किया और हमें भी बहुत समझ में आया। सर ये वी प्रॉमिस फ्रॉम द कोलंबिया इंस्टीट्यूशन दैट वी work for the qualitative development of the education, and we give our best to explore or to provide education to the learners and to improve the society. On behalf of entire Columbia family, I extend my heartiest thanks to Dr. Prashant Srivastava sir for joining us in this next national lecture series, or for your appreciation, sir. It means a lot to us. Thank you so much, sir. Thank you so much. And all the best. Thank you so much. I also welcome Professor Senapaty sir, who have joined us. And today's his session is, he's very well known, very kind-hearted person, and he always gives us his motivation and guidance for the qualitative development of the education system. So I invite Gopika Sinha ma'am to give the concise introduction of Professor Senapati sir. Thank you, Nat. Good afternoon, all of you. I'm Gopika Sinha. Welcome to the most amazing national lecture series on National Education Policy 2020, a way forward for quality education. I take this opportunity to welcome today's keynote speaker, Professor Hrushikesh Senapaty sir. He is former director of NCERT, New Delhi. He is about 30 years of experience in the field of teaching, research, development, training, school education, and teacher education. He has successfully worked as director of NCERT from 2015 to 2020. He has played a significant role in providing relevant inputs for drafting the National Education Policy 2020 of India, a key role in the implementation of its NCERT program, NISTA and NAS 2017. 2.2 million students from all over the country participated. Also participated in the preparation of their
learning outcomes at elementary and secondary stage in 2017 and 2019, conducted in service at pre-services education programs, contribute to the development of capacity building of our teachers, policy material, learning material, textbooks, research education, channel Swam Prabha and PM Vidya. He has introduced art integrated learning approach. He worked he worked with many national and international organizations. Also worked in his university department South Area region. He has awarded honorary D.Litt degree by Revenshaw University, Cuttack, Odisha. Many of his research papers have been published. Participated in our national and international education programs. He has developed many training packages. He has visited several countries for academic purpose, that is Norway, Thailand, China, Malaysia, Taiwan, Switzerland, Australia, South Korea, and other countries. I'm sure we will be enriched by the National Lecture Series. Once again, I welcome sir and all of you. Thank you. Thank you so much, Kopika ma'am. Sir is also played as a very prominent figure in framing the National Education Policy 2020. Sir, we welcome you once again, and I kindly request you to share your views on the specific topic of pedagogy assessment and curriculum. I welcome you once again. Thank you for your kind words. I'm really very happy to be a part of this program, and I extend my thanks to the organizers, Madam Abha Dubey and Dr. Arun Dubey and others, because they have given me the opportunity to share my experiences with you all. This is a good occasion because we are discussing on NEP 2020 and the way forward for quality education. Because quality education is our concern now in 21st century. And we all know that NEP 2020 was released on 29th July 2020. And we have completed more than 3 years. We are in the process of implementing the recommendation of NEP 2020, and we have come out with National Curriculum Framework for Foundational Stage, National Curriculum Framework for School Education in August 23. And if I will give you the background, because this is not the, all of us know, this is not the first policy. This is the third policy after independence. We had our first policy in the year 1968, then second policy in 1986. And before that, we had 3 commissions that all of us know: Radhakrishnan Commission, Mudaliar Commission 52, 53, then Kothari Commission 64, 66. Then as per the recommendation of the Kothari Commission, we had passed policy in the year 1968. And to implement the recommendation of NEP 2020, we developed National Curriculum Framework. And you all might be knowing that first National Curriculum Framework was developed in the year 1975 by NCERT. Then second one in 88, third one in 2000, and fourth one in 2005. Then the fifth one for the foundational stage that was developed in the year 2022 in October 22, and the next one, that is the NCA for school education, was released in August 23. And now we are in the process of implementing the recommendation of NEP 2020. First of all, we should know what is the vision of this NEP 2020, because I would like to highlight on curriculum, pedagogy and assessment. But first, before that, we should know what is the vision of this policy, what is expected, and how this policy is different from other policies. Because this policy we have after 34 years, the gap that more than 3 decades, we have this policy. And if you see the vision of the policy, you will find that we are going to develop a system of education which is based on Indian ethos. Because ultimately what we want, we all feel proud for our country,
and we are proud of our culture, tradition, value system, and we want to make our country a knowledge superpower, India a knowledge superpower. And we can make our country a knowledge superpower only through a system of education based on Indian ethos. That is most important. All of us should understand that has been reflected in the vision of the policy. Now, what does it mean when we say Indian ethos? That means system. That means our children. What we expect? We expect our children should be connected to their roots, and our children should understand our culture, our tradition, our value system, so that they will be connected to our culture, and ultimately they can contribute significantly in nation building, as a result of which we can develop a very equitable, vibrant knowledge society. And that is required for the effective functioning of democracy, because we are in living in a democratic country. For the effective functioning of democracy, we need a very equitable, vibrant knowledge society, and that is possible only through a system of education based on Indian ethos. Because why we are putting so much emphasis on Indian ethos? Because we feel proud, and we all know, all the time we say from the ancient time that Vasudeva Kutumbakam, and we say Sarve Bhavantu Sukhina, because that is our culture. That from the ancient time we have been propagating this, and that should be integrated into our education system. It may be school education, it may be higher education, it may be teacher education, it may be technical education, whatever it may be, it should be integrated into our education system, so that we can really connect our children to their roots. Second thing, if you look at the vision of the policy, the focus is on fundamental duties, because now we all are fighting for our rights. We are conscious of our rights. We know our fundamental rights, and also fighting for the rights, but we have forgotten our duties. And the committee that responsible for this NEP 2020 has taken cognizance of this fact. If we will not strengthen the affective domain of our children, if we will not make them conscious of their duties and responsibilities, then it will be very difficult to bring about change in our country, and it will be very difficult to have a better society. That is why the what policy in in the vision, it has been reflected that all our institutions, that means are responsible for this. That means the curriculum and pedagogy of all our institutions must develop a deep sense of respect towards fundamental duties and constitutional values. That means the curriculum and pedagogy of all institutions, it may be school education, higher education, all institutions must develop a deep sense of respect towards fundamental duties and constitutional values, because that is essential, and that will be possible if we can strengthen the affective domain of the personality, because in current scenario our focus is on cognitive domain. That is why policy is putting a lot of emphasis on affective domain and on holistic development of the personality. Then the third thing, policy is talking about sustainable development, policy is talking about human rights, policy is talking about global citizenship. That has been reflected in the vision. And ultimately, what does it imply? It implies that our children will be good citizen of this country. They will be good human being, and also they will be global citizen. That is the expectation, and what we expect, we want a system of education which will will make our children good citizen, good human being, and also global citizen. That is our expectation. Then if you see the structure of the policy, that you know, because we have already completed 3 years, and now just I will tell you the implications for curriculum and pedagogy and assessment and system. Now we are going to have 15 years of schooling, because now currently we have 12 years of schooling, and now it will be 15 years, 5 plus 3 plus 3 plus 4. And when you say it is 15 years, the 3 years of preschool will be integrated into class 1 and 2. That will be the foundation stage, and we are in the process of implementing that. We have come out with the textbook. So what does it mean when we say foundation stage? Why we are putting so much emphasis on foundation stage? In foundation, because we all know that maximum brain development takes place during this period, and what research says, around 80 or 85% of brain development takes place during this foundation stage. That is why our NEP 2020 has taken cognizance of this fact, and it has been recommended that we have to provide education to our children, high quality education to all our children who are coming from rural area, from tribal area, from slum,
and our Divyang children, all should be provided high quality education at the early stage, so that it will help in the maximum brain development, so that they can be good citizen of this country. They can contribute significantly in nation building. That is the expectation. That is why you will find a lot of focus is on foundation stage. And what will be the curriculum of this foundation stage? Curriculum, that means we are going to develop a holistic curriculum. If you find it is not only the cognitive domain will be highlighted, along with cognitive, we have to strengthen the affective and psychomotor domain of the personality. That is why during this foundation stage, our focus will be cognitive development, on social development, on emotional development, on physical development, that is on ethical development. That means all areas of the personality should develop, all the potentiality what our children are having, that should develop to the maximum extent. That is the expectation. So that foundation will be strong. Once the foundation is strong, then there will be no problem. Our children will not leave school, because why they are leaving school? What you will find now, that most of the children, they are not having the basic skills and competencies what is required for that particular stage. Why it is happening? Because we are not providing quality education. That is clear, because that is why what research says, or some research study says, the class 7 children are unable to read the text of class 2. So what does it mean? That means they are not having the basic skills and competencies. So that is why now time has come. We have to make our foundation stage very strong, so that they will have the basic skills and competencies, and they will not leave school, and there will be holistic development. Focus is on holistic development of the personality, not only the cognitive domain. And the job of the teacher will not be just to transact the matter, what is there in the textbook, what is there in the syllabus. Job will be to facilitate learning, to create very conducive learning environment for our children, so that they will get opportunity to develop their potentiality, what they have, and ultimately they will be good citizen of this country, good human being. That is the expectation. That is why foundation stage is very important. That is why Nipun Bharat has been set up as per the recommendation of NEP 2020. And but now we have to think of what is the implication for the teacher, because not only the curriculum, by developing curriculum, by bringing out change in pedagogy and or in assessment, we can improve the quality. But along with that, what we need good teachers. And currently we don't have teachers for this stage, and we have to prepare teachers and for the effective implementation of the recommendation of NEP 2020. Similarly, another stage, that is the preparatory stage. And when we are talking about the preparatory stage, this is class 3, 4, 5. And when class 3, 4, 5, that means you will find a pedagogical shift. That means what is there in the textbook they are learning, and teachers are transacting, and they are mostly delivering lecture, whatever it may be, but they are not going beyond textbook. And what NEP has recommended, that NEP has recommended they will learn different subjects, and mostly the transaction of the curriculum is very important, because how we are transacting curriculum, that matters. That is why NEP is talking about toy-based pedagogy, NEP is talking about inquiry-based pedagogy, NEP is talking about art-integrated learning, sport-integrated learning, and discussion-based learning, discovery-based learning. So that means ultimately what we want? We want our children should be autonomous learners. Our children should be responsible for their learning. Let them explore, let them innovate, let them create, and let them exhibit their potentialities, what they have. If we can create that sort of conducive environment in our classroom, and classroom process will be more vibrant, and our children will learn very effectively. Because ultimately what we want? Ultimately we want our children should enjoy learning, and they will enjoy learning when they will be engaged. And how they will be engaged? They will be engaged if we bring about change in our pedagogical process. If it should not be teacher centered, it should be child centered, and the children should get opportunity to exhibit their talents, and teachers should facilitate. You will find that is change in the role of teacher, role of the student. They are not passive listeners, they are active learners. Nature of the classroom, that means classroom, that they will not sit in one place for all the time, that they will talk, they will share their experience, they will interact, they will do some group work. So and there will be change in the process of assessment. That is why I want to highlight on this curriculum, pedagogy and assessment, because that is the key. If really we want to bring about change in the system, we have to bring about change in our curriculum.
bring out change in your pedagogical process and bring out change in the process of assessment. Similarly, when children will be coming to this middle stage, you will find what has been recommended by this NEP, that they will be learning about different subjects, because in class 6 that practice is there also now. Currently, our students are learning about language. They are learning 3 languages, and they are learning mathematics, they are learning science, they are learning social science. But along with that, what you will find, that policy is putting a lot of emphasis on physical education, on art education, and on vocational education. That is the most important thing. Even during this preparatory stage, so some development of pre-vocational skills are also essential. That has been highlighted in this NCF 2023. So now what NCF 23 has recommended, that there will be 4 groups. One group is the language group, that they will be in middle stage, they will be learning 3 languages, and in preparatory stage they will be learning 2 languages, and along with the language what they will learn. That second group you will find in NCF 23, which was released in this last August 23. That is talking about art, that is talking about physical education and vocational. That is one group. That is totally neglected in our system. It is there, physical education there, but we don't give due weightage what should be given. That is why the physical education is totally neglected. That policy has recommended that the second group will be art, physical education, and vocational education. Then the third group will be the social science and interdisciplinary areas, because policy is talking about cross-cutting areas. Cross-cutting areas, not only this subject, and students should understand what is the interrelationship among these subjects. That is most important. If they will not know the interrelationship, then that will not help in their holistic development. They should understand, they should have conceptual clarity, they should understand what is the interrelationship between science and mathematics, science and social science and language. That means interrelationship among the subjects. That is most essential. And along with this traditional subject, they will be learning the art, they will be learning this vocational education, and this physical education will be highlighted. And some because the cross-cutting areas are there, that has been also highlighted by this national curriculum framework. And why we are putting so much emphasis on vocational education at this stage? Because we all know we are going to be the youngest country in the world. So because India is going to be going to have large number of youth in next decade. So that is what now time has come, and we have to take care of our children. We have to develop their skills and competences, what is required. And another thing, when we compare our country with other countries, the developed countries, what we find in developed countries, they are putting a lot of emphasis on vocational education. That is why in our curriculum, vocational education should be an integral part. That is why policy has recommended there will be no hard separation. No hard separation between vocational education and general education. There will be no hard separation between curricular and co-curricular activities. There will be no hard separation between science and social science. That is the recommendation. Now NCF has come with the concrete recommendation that there will be a lot of flexibility, and vocational education will be an integral part of general education. Every student, before completion of school education, will have to acquire mastery over at least one vocation. That is the requirement, that is the recommendation of NEP 2020, and that is going to be implemented. That means vocational education will be introduced from class 6 onwards. They will be exposed to different vocation, what is available in the locality. Because in our country, in India, only 5% of students are joining the workforce through formal vocational education, whereas in Korea it is 96%, in Germany it is 75%, and in USA it is 52%. And Korea, if you compare Korea and India, you will find both were same. The position of economic condition of both the country were same in 1947 when we became independent. At the same time, Korea also became independent, and our position was same. But now you see, Korea is a developed country and India is a developing country. We are mostly using Korean products in our country. Why it is happening? You will see that in vocational, they are putting a lot of emphasis on vocational education. 96% of children, the workforce are coming through formal vocational education.
and they don't look down vocational. They give top priority to vocational education. But in India, we look down vocational education. We have separate stream. We don't bother for vocational education. That is why this policy, national policy, has highlighted on this vocational education. It is going to be mandatory. It is going to be an integral part of our curriculum. That we cannot exclude this. This will be mandatory. Then when our children will be coming to secondary stage, in secondary stage, what you will find, you will find a lot of flexibility. Policy has recommended a lot of flexibility. Why we are talking about flexibility? We all know we are talking about multiple intelligence. Everybody is having multiple intelligence, and it is a question of degree. Some may be good in logical, mathematical intelligence. Some may be good in musical intelligence. Some may be good in kinesthetic intelligence. Some may be good in interpersonal intelligence, intrapersonal intelligence. So like this, it is a matter of a degree. But an educator or as a teacher, what is our job? We should identify the potentiality what our children are having. As per their potentiality, as per their need, as per their aptitude, we should provide them education. We should give them the option. They should select subject of their choice. But in current scenario, that option is not there. We have very watertight compartment. We have done, this is science means this is only science. Only the students who are studying science, they cannot opt for social science. Even the social science, suppose they want to study some other subject, they cannot opt for that. So that restriction is there. But now policy has recommended that there will be flexibility. Good number of new subjects will be introduced, and the students will select subject of their choice. So that is why curriculum is going to be very flexible, and students will get opportunity to select subject of their choice. That is the most important thing that has been recommended. That is why what we expect. We expect that our system, school education, should be very flexible, very conducive, so that children will get opportunity to develop their potentiality. They will select subject of their choice as per their aptitude, and secondary education particularly will be very flexible in nature. That is why what policy has recommended, there will be secondary education of 4-year duration. But NCF has recommended now currently, because it will take time. That is why phase 1 and phase 2. In phase 1, students will be class 9, 10, will be studying the subjects what they are studying in middle school. That means in middle stage they are studying languages. So they are studying 3 languages. But here in secondary they will be studying 2 languages, and they will be studying this art, physical education, and vocational education. And along with that, they will be studying social science and different interdisciplinary areas. And then they will be studying science and mathematics and computer. And they have the option. It is not that all the subjects they will choose. They will select subject, at least 4 subjects and 1 optional, and that they will select from the minimum 2 groups. So that option is there. Lot of flexibility there. So that is going to happen. So it will bring about a change. This is about the structure of the policy. Then I would like highlight about the curriculum, specifically curriculum, pedagogy, and assessment. If you see the curriculum, what has been recommended in the policy? Policy has recommended curriculum will be competency based. What we are doing now, and what type of curriculum we have. Our curriculum is content based. And what we expect our students should acquire mastery over the content, what is there in the textbook, what is there in the syllabus. That is our expectation, and students are doing that. They are securing good mark in board exam, no doubt about that. But NEP has recommended it to be competence based. Why? That we should understand why we want that it should be competency based. Because we are in 21st century. And in 21st century, this content mastery is not going to serve the purpose. We do not know what type of job will be available in future. That is why NEP is talking about multidisciplinary approach, no watertight compartment, multidisciplinary approach. We should understand the interrelationship, because when we do not know about the jobs what will be available in future, then what we should do, this content is not going to help. We should rather use this content as a medium to develop the skills and competencies what is required in 21st century. And what we require? We require problem solving ability. We require critical thinking. We require creativity, good communication skills. And that means ultimately our children should be in a position to innovate, to create.
And that is the need of hour. That is why curriculum is going to be competency based. The content load will be less, so that student will get more opportunity to uh, conduct different activities. They will be participating in different activities. They will collaborate. They will share their experiences. They will learn from each other, and there will be teamwork. So all these we expect, we has been recommended. Why? Because let them come out with their own ideas. Let them construct their own knowledge. Because we are encouraging that. That is why curriculum. That means we are going to have good number of new subjects. Now it is clear. NCEP has come, and now options are there, groups are there, and students will have the opportunity to select different subjects. Though in NCEP we say it is phase 1 and phase 2, class 9, 10, the phase 1, and 10, 11, 11, 12, the phase 2. But it has been recommended that after 10 years, that these phases will not be there. It will be only one stage, that will be secondary stage. This is the recommendation about the curriculum. And in curriculum also you will find things. We are talking about many cross-cutting areas. That in our system that is not there. Why we are talking about cross-cutting areas? We are talking about Indian knowledge system, rootedness. We are talking about values and disposition, that is missing. And we are talking about inclusion, because all should take advantage of our education. That is why the children who are coming from different places, different locality, different region, with different language, different religion, everybody should take advantage of this. That is why inclusion should be there. And focus should be on environment, because environmental degradation, we are talking about environmental sustainability. And that is why UNESCO is putting a lot of emphasis on this sustainable development. So environment is another cross-cutting area that has been highlighted by NCF. Then another most important thing that we all realize, that quota problem we are facing. Quota means that in Rajasthan quota, where students are committing suicide. Because why? Because there is mental stress, there is depression, and that mental health is going to play a very significant role. That is why we have to take care of the mental health of our children. That is why in NCA you will find there is one cross-cutting area, that is the counseling, guidance and counseling. That is most important. Another area you will find in curriculum that we are going to, that is the technology, educational technology. Now we all know Chat GPT, that has come. Now we are talking about this generative artificial intelligence, not only generative artificial intelligence, because we can generate content, and that is going to influence our education system. That has already influenced the industry. That is going to influence our education system. That is why we have to also take care of that. So this is about our curriculum, and this is not only this, and in this curriculum, not only along with the cross-cutting area, you will find the subject areas, new subjects, that vocational education, this art, physical education, and interdisciplinary areas will be there along with the traditional subjects. Then another most important our curriculum, that means what NCF is talking about, that is the school culture. That is most important. Our students should feel home, that they feel at home. That means when they are coming to school, or when they are coming to college or any university, they should feel at home. They should feel very comfortable. And this our school environment, or even our college or higher education institution environment, education of the education institution should be very cordial, very conducive, so that let everybody feel happy. So that is most important. That is why now we are putting emphasis on the school culture and this teaching learning process. That is because our system is now process oriented. It is not product oriented. Because earlier days, that means when our focus was on behavioristic model, at that time we say that our system is product oriented, because we have to secure good mark in exam oriented. That is going on. But now what policy expect? Policy expect it should be process oriented. What our children learning, that is important, no doubt about that. But how they are learning, that is more important. That is why it should be process oriented. Policy is putting lot of emphasis on this process oriented. That is why we have to take care of our school culture, school process, and then we have to develop an ecosystem, so that we can really implement the recommendation. We have to provide training to the teachers. We have to provide strengthen the school community relationship. All these are the recommendations. So then I will come to the pedagogy. If you see the pedagogical aspect, in pedagogy, what we are talking about, in NEP 2020 is talking about experiential learning. We all know why we are talking about experiential learning. Because let children experience, let them share their experiences, let them be exposed to a variety of learning experiences, learning situations.
And that will help them to observe the learning that they observe. That will help them to formulate their own hypothesis, verify their own hypothesis. Ultimately, they will construct their own knowledge, because knowledge comes from within, not from outside. Let children construct their own knowledge through their experiences. So now time has come, we have to provide them variety of experiences, maybe inside the classroom, maybe outside the classroom, maybe using technology, maybe through role play, etc. That is why what policy has recommended experiential learning. Policy is talking about art integrated learning. Policy is talking about sport integrated learning. Policy is talking about toy based pedagogy. Policy is talking about activity based pedagogy, and many things, that means discussion based, inquiry based, many things policy talking about. And when we say art integrated, that means we have already conducted some experiments. We have come out with the module, NCERT has come out with the modules, and it is being implemented in some states and in some regions. And what we, that the policy has done, before this policy we started this, and policy has fortunately policy has taken cognizance of this fact and recommended this one. And why we are talking about this? Because we want to make the teaching learning process more meaningful, more joyful. Let students enjoy their learning. When we talk art, it is not only visual art. Art means it includes the music, it includes theater, it includes dance. That means everything, all form of art should be integrated with teaching learning, so that teaching learning process will be very meaningful, classroom will be very vibrant, student will enjoy their learning, they will be very feel happy, and they will not leave school. That is the most important thing. They will not, there will be no dropout. And along with that, what we can do, we can preserve our culture, or it may be folk dance. That means we can preserve our culture, and we can make teaching learning process more meaningful, more joyful through this art integrated learning. And similarly, sport integrated policy is talking about sport integrated learning. Let them play, because when we are talking about the affective domain, because our school is mostly promoting logical mathematical knowledge, and we are focusing on this cognitive behavior. But now we are putting emphasis on affective domain. If you see the socio-emotional qualities, the values we are talking about, all these we learn from the playground. When we play, we develop the team spirit, we develop the fellow feeling, we develop cooperation, we develop belongingness, and all the values, that means discipline, all we learn from the playground. Let our children play, let them, that will really help in the development of holistic personality. So that is why policy is encouraging about the sport integrated learning. Policy is talking about ICT integrated learning. It is not only ICT, that means we should use it as a medium, but ICT should be we should that we should use it as a medium, and we should use it as a tool. So that they will use this ICT tool to do something, and to collaborate, to have better collaboration, better sharing, and that they should do. And it may be DOI based, storytelling based. All these we are talking, policy is talking about. Why? But what is the basic principle? Basic, that pedagogy. That means that way. So there should be such that our student will be engaged, they will be involved, and they will get opportunity to exhibit their talent, they will get opportunity to create something in a different way, to solve the problem in different way. Ultimately, it will strengthen the school process, it will make the classroom process more vibrant, and process part will be highlighted. That is why policy has recommended change in pedagogy. And the last thing, that curriculum, that is assessment, that is most important. Now, what type of assessment system we have in our school system, in our college system, university system? How do we assess? We assess the performance of the students at the end, just to know to what extent we have been successful in achieving the learning objectives. What we have, what was our expectation, and what we have achieved, we compare. That we all know, that is summative assessment that we do at the end. But along with that, we, in our traditional system, we follow formative assessment. That may be after 3 months, maybe after completion of one unit. In between, you conduct some test just to monitor learning, whether students are learning or not, and what is their performance. And accordingly, we give them some feedback, some remedial measure. If they're not doing well, then we give them some remedial measure. That is the formative assessment that we follow in our traditional system. And after 3 months, after 2 months, like that. The question is, why our students will wait for 3 months to get the feedback? Why not immediately? And since it was product oriented, we wanted to assess their learning performance at the end. That we are doing.
And as per this traditional theory, learning theory, assessment is something separate from teaching learning. It is something isolated from teaching learning. But as per the modern learning theory, constructivist learning theory, assessment is an integral part of teaching learning. When it is an integral part of teaching learning, that means assessment and learning both will move simultaneously. They will go simultaneously. What does it mean? That means when they are learning, they should be assessed. They should get opportunity to assess. It is not that teacher will do everything. Let them be assessed by themselves. That is why what policy has recommended. Policy has recommended self-assessment, their performance. Policy has recommended peer assessment. Let the peer group make assessment of their friends. Then there should be teacher assessment. That is there. That is the traditional thing. That is why policy is talking about three modes of assessment. Assessment of learning, that we are doing. We are familiar with that at the end. Assessment for learning, that also we know. That mostly we are in product oriented approach. We want that our students should acquire mastery over the content. That is why we give remedial measure. But now we are talking about assessment as learning. Let students reflect on their own learning. If they will reflect on their own learning, then definitely they will know their strength as well as their weakness. Once they know their weakness, they will try their best to overcome their weakness. That will really help to bring about change in the system. That is why policy is talking about assessment of learning, assessment for learning, and assessment as learning. Focus is on assessment as learning. And when we say assessment as learning, then what are the assessment tools? How we are going to use this mode of assessment, and what are the tools? Only testing techniques is not going to serve the purpose. Test we are using to measure the cognitive behavior, but to measure the affective behavior, to assess the affective behavior, to assess the other domain of the personality, we have to use non-testing techniques. It may be observation, it may be interview, it may be rating scale, it may be rubric, it may be portfolio. All these non-testing techniques we have to use along with the testing techniques, because we all know testing technique, when we say test is the most authentic tool for objective assessment. But this rubric is the most authentic tool for subjective assessment. Nowadays we are putting a lot of emphasis on this rubric, and rubric will be developed in consultation with the students, because students are going to be involved in the process of assessment, and that will really bring about change. And when we'll develop rubric, we'll fix the criteria, and in consultation of the students, and the same rubric will be used by the teacher, and will be used by the peer group, will be used by the student himself or herself. Even it can be used by the parents also. So that means assessment is going to be very transparent. It is going to be, that is why we are talking about 360-degree assessment. That is why now we are coming with the holistic progress card. The holistic progress card, that means it will not take care of only their mark, the performance in different school subjects. It will take care of their behavior in other domains of the personality. Everything will be recorded, and we will take the help of this artificial intelligence to maintain this holistic progress card, so that it will really bring about a reform in our teaching learning process. That is the most important thing. That is why if you see the policy, I'm not talking about only school education. In school higher education also, previous speaker was also talking about that higher education, that multiple entry, multiple exit, and curriculum is going to be of international standard, and a lot of flexibility will be there, multidisciplinary approach will be there. Even our teacher education program is also going to be multidisciplinary. When it will be multidisciplinary, that means what is the purpose? Because student will get opportunity to learn many things simultaneously, because one type that there should not be any watertight compartment. Whatever they want, let them learn, let them have some exposure to other areas, so that they can develop the skills and competency what is required in 21st century. So that is why now our focus is on multidisciplinary approach, even in higher education, and also in school education we are giving a lot of freedom to our students. And ultimately, to implement the recommendation, we have to bring about change in the curriculum, we have to bring about change in our pedagogical approach, we have to bring about change in the process of assessment, and along with other things, and we have to prepare teacher accordingly for different stages, keeping in view our need and our requirement. Then only we can really implement the recommendation of policy, and we can make our country a knowledge superpower, and we can really help our students
to be connected to their roots and to develop their affective domain, so that there will be no mental health issue in future. They will not never commit suicide, that they will not feel depressed. So that type of education we have. This is the need of hour, and I'm very happy that we are organizing this lecture series on this NEP 2020. And it is not that what has been recommended, how they are going to be implemented, and what is our role, what is our responsibility, and now at this time what we can do at our level, because we are teaching, and when we are teaching, how we can implement in our classroom, and how we can bring about change in our mindset and the mindset of the students, mindset of the parents, and how we can strengthen the school community relationship. All these are different, the concern and our concern, and we can really contribute significantly if we think seriously. And I think this lecture series will help in creating some awareness, and it will not only create awareness, it will also help us to feel what we should do, and it will make us conscious of our duties and responsibilities. So thank you very much for giving this opportunity. I know now it is going to, I have taken some time, and after that it will be over, and we can have some discussion, question and answer session. You are free to ask any question, and you are free to give any your suggestion, anything you like. So thank you very much for this arranging this lecture. Thank you so much, sir. You have given the very depth detail of how to implement NEP, the recommendations of NEP, and how a particular individual college adapted on their own in their curriculum, pedagogy, and assessment. Sir, if you have some suggestions for assessment, learning, learning as assessment at college level, how can we implement it? Learning as assessment. If you have some tips, so will you please share with us? Yes. This is very important area, and the question is, it is not that only recommendation should be there. We should say how this learning as assessment, but the thing is that how we are going this in our classroom. That is a big challenge, because when we say learning as assessment, because students are going to be involved in teaching learning process, and we are going beyond this cognitive area. It is not only cognitive behavior, and we are going to assess the affective, psychomotor, and other domain of the personality. And when you say learning as assessment, or assessment as learning, that means assessment as learning means students will be involved, self peer assessment, self assessment, as a teacher assessment will be there. And how can we do that? So suppose now we are talking about rubrics. And why we are talking about rubrics? Because rubrics we can use to assess a project. Because now what we expect, when it will be multidisciplinary, it is not only science, or this is only mathematics. Because what we expect, we want to develop the competencies. When we are talking about the competency, it is not related to a particular subject. It is interdisciplinary, and it is multidisciplinary. That is why what we can do, we can select, we can suppose we will select a project on environmental education. This is the environmental when you say environmental education, that means it is related to science, it is related to social science, everything. So that suppose we will give a project on environmental education, and how we are going to assess this. And normally, how do we assess? When students submit project, we assess, and what we show, we think that yes, language is good, organization is good, content presentation is good, illustration is good, everything is good. That accordingly we give some mark. That we do normally. Teacher, that is because everything is done by teacher. When we suppose for in this project we want to involve our students, what we can do? We can ask students before giving project. This is the project we are going to give you, and you tell us what are the criteria and how you want to be assessed. And suppose what are the criteria, what should be the criteria of this project, the assessment of this project. That when we are preparing a project, yes, language is one component, no doubt about that. That should be it should be written correctly. Then there should be coherence. So for the organization of the content, how it will be presented. Then the third thing, that should be illustration, and with better illustration, we can present it in a better way. So like this, we can identify some area, some that indicator we can say, and in consultation with the students.
And once suppose students agree, yes, this will be one area, that means when they will prepare the project, they will take care of the language, and they will take care of the illustration, and the source where they are getting material, and the organization of the content, what type of content will be there. So when they will do this, then what we can do, we can go for grading. We suppose first criteria the language, suppose everything is all right, then we can say this is outstanding. Then we, it is less than that, then we say it is excellent. Then we can say it is very good. Then we can say good. Then the last lowest, that means we can say it needs improvement. Like this, we can go for grading, and we can prepare the rubric. And the same rubric can be used by the student, can be used by the teachers, can be used by the peer group. Even parents also can make use of this. If we do that, then definitely we are going to involve students. And students, when students will be involved, what will happen? They will reflect on their own learning. They will know their strength, they will know their weakness. Their peer group also will tell them, yes, this is yours, because they are more free with the peer group. So by doing this, what we are doing, we are giving opportunity to students to reflect on their learning. If you compare assessment as learning with assessment for learning and assessment of learning, that means only in assessment as learning, we are giving opportunity to student to reflect, because it's a continuous process. And immediately when they're learning, they're also reflecting. But in assessment for learning, so in a traditional setup, when we're conducting after 3 months, they're waiting for the 3 months to get the feedback. But assessment is an integral, since assessment is an integral part of teaching learning, students should be involved, and we can involve students while conducting the assessment, while before giving them the project, and we can ask them what should be the criteria. We can go for grading, and we can use the same tool. That means students can use the same tools, and same tool can be also used by the teacher. So that is an example that we can make assessment as learning if we involve students, and if we use this rubrics, then this portfolio, everything can be recorded, all type of activities, then it will be assessment as learning. I think I am clear. Yes, sir. Yes, sir. It's clear. So, if there are any question, I would like Rehman to ask, please. गुड आफ्टरनून सर. सर कुछ क्वेश्चन आए हैं. भाषा को लेकर एनएपी 2020 का जो दृष्टिकोण है वह स्कूल में कैसे संचालित होगी? भाषा को लेके जो ये है वो एनईपी 2020 में हम मल्टीलिंगुअलिज्म का बात कर रहे हैं. मल्टीलिंगुअलिज्म का बात क्यों कर रहे हैं? अभी जो प्रॉब्लम है हमारा सोसाइटी में, हम छत्तीसगढ़ है कि उड़ीसा है, एमपी है, हमारा स्टेट में ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है, और जो ट्राइबल लैंग्वेज है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द स्टेट लैंग्वेज. हम जो मटेरियल डेवलप करते हैं वी डेवलप इन स्टेट लैंग्वेज, and we ask all children to learn through state language. That is why children whose language is different from the state language, they suffer. That is why policy has taken cognizance of this fact that learning should take place in the mother tongue at the early stage, at least at the early stage. That means children who are coming from tribal area whose language is different, mother tongue is different from the state language, we should provide them learning material in their language. It may be textbook, it may be other primer or whatever it may be. Then why we want to do this? Because students are leaving school because they do not know the language, they are not feeling comfortable, they are not happy. That is why what we should do, we should the teachers should know the local language. So teachers who are working in tribal area, they should know the tribal language so that they can communicate effectively. If they do not know, we should provide them training, or we may select some teacher from that locality, so that there should not be any communication gaps. That is why early stage, what research says, in early stage, if students are exposed to many languages, they can learn easily. That is why it has been said that at the early stage, instruction should be in mother tongue. At least, that means in the early stage, we should try our best to teach our children through their mother tongue. Then later stage they can learn other languages, and policy is very flexible about this, that there is no restriction. But it is encouraging that students should learn through their mother tongue so that they can understand. There will be clarity in their understanding, and they will feel comfortable, and they will not leave school, and they can learn other languages very easily. That is the
expectation. That is why policy is encouraging that in classroom we should tell them or we should teach them in their mother tongue. That suppose in private school they are teaching through this English medium, and in government school in some states also they are in, like Andhra, they have started this English medium schools. But do you think of the children whose mother tongue is different in the early stage? They will not feel comfortable. That is why early stage we should teach them in their mother tongue, through their mother tongue, so that they will feel comfortable. And language is not a barrier. That is why teachers should know other languages, and there should be multilingualism inside the classroom. That is the implication. थैंक यू सर. सर एक क्वेश्चन और है सर, होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड कैसे तैयार होगा जिससे बच्चों की प्रगति का सही पता चल सकेगा? होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड कैसे होगा? देखिए, अभी भी हमारे पास प्रोग्रेस कार्ड है, स्कूल में प्रोग्रेस कार्ड है, हम प्रोग्रेस कार्ड मेंटेन करते हैं. हमारा प्रोग्रेस कार्ड में हम क्या करते हैं, हिंदी में कितना नंबर है, इंग्लिश में कितना नंबर है, और मैथमेटिक्स में कितना नंबर है, और साइंस में कितना, सोशल साइंस, ये इसको हम लिखते हैं. लेकिन ये अभी जो हम होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड का बात कर रहे हैं, ये डिफरेंट सब्जेक्ट का साथ बाकी जो पर्सनालिटी का जो अदर डोमेन है, हम बोलते हैं कि हमारा बच्चे इमोशनली स्टेबल है कि नहीं, वो ग्रुप में काम करता है कि नहीं, और उनका जो इनिशिएटिव लेता है कि नहीं, उनका जो पोटेंशियल अदर एरियाज में है, सपोज स्पोर्ट्स में है और म्यूजिक में है, डांस में है, आर्ट में है, तो वोकेशन में है. तो ये जो अदर एरिया में जितना एक्टिविटीज होगा, एवरीथिंग विल बी रिकॉर्डेड. जितना एक्टिविटीज हम स्कूल में करेंगे सब रिकॉर्ड करेंगे वही प्रोग्रेस कार्ड में, क्योंकि वो प्रोग्रेस कार्ड से पता चलेगा जे उनका परफॉर्मेंस मैथमेटिक्स में कितना है, और इन अदर एरियाज जो हम बोलते हैं कि इमोशनल, सोशल और एथिकल, फिजिकल, ऑल दिस एरियाज में उनका परफॉर्मेंस कैसे है. उसके लिए एनसीईआरटी बनाया है एक प्रोग्रेस कार्ड, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, स्टेट का साथ शेयर हुआ है, आप लोग इसको देख सकते हैं, और जो डायमेंशन आइडेंटिफाई किया है और कैसे करना है इसमें डिटेल है. लेकिन ओवरऑल हमारा पर्पस क्या है, दैट जितना पोटेंशियलिटी है सब रिफ्लेक्ट होना चाहिए, खाली स्कूल सब्जेक्ट का होना नहीं चाहिए. स्कूल सब्जेक्ट मतलब ओनली लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस का हम बात कर रहे हैं, बाकी जितना इंटेलिजेंस है ये सब प्रोग्रेस कार्ड में आना चाहिए. ये रिकमेंडेशन है, अभी शेयर हुआ है, वो जब इम्प्लीमेंट होगा ये क्लियर हो जाएगा. थैंक यू. थैंक यू सर. Thank you so much, sir. Now I request Dr. Neelam Arora ma'am for giving the brief report of this 4-day national lecture series and vote of thanks. बहुत शुक्रिया मैम आपका. मैं इन 4 दिनों की रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ. कोलंबिया कॉलेज रायपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के संदर्भ में शिक्षा से जुड़े समस्त सदस्यों, शिक्षकों, प्रशिक्षकों और छात्र अध्यापकों की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए 4 दिवसीय नेशनल लेक्चर सीरीज का आयोजन किया गया. विषय था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, अ वे फॉरवर्ड फॉर क्वालिटी एजुकेशन. 16 अक्टूबर 2023 से आरंभ हुई यह लेक्चर सीरीज आज 19 अक्टूबर 2023 को संपन्न होने जा रही है. ओपनिंग सेरेमनी में हमारे चीफ गेस्ट थे माननीय डॉक्टर अरुणा पाल्टा, वाइस चांसलर हेमचंद विश्वविद्यालय दुर्ग. आपका सानिध्य हमें प्राप्त हुआ, आपकी प्रेरणा हमें मिली और आगे हम उस प्रेरणा से काम करने में सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए. बहुत हम उनका आभार हमेशा मान रहे हैं और मानते रहेंगे. क्लोजिंग सेरेमनी में हमारे चीफ गेस्ट रहे डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव जी, डीन स्टूडेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग छत्तीसगढ़. सर, आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार कर हमें अनुग्रहित किया. आपने मल्टीपल एग्जिट, मल्टीपल एंट्री, विषयों के चुनाव, रिसोर्स की शेयरिंग करना जिससे कि हर बच्चे को शिक्षा में समानता के अवसर मिले,
अपने मन चाहे विषयों को चुनने के अवसर मिले, इन सारे पर आपने प्रकाश डाला। किस तरह से बच्चे डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं और डिग्री कोर्स कर सकते हैं। बड़ी सहजता के साथ ये बातें प्रस्तुत हुई और एक गहरी समझ हमारी इस पर बनी। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हमारे बीच जन प्रगति एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी श्री हरजीत सिंह हुरा जी हमारे साथ रहे। उनकी प्रेरणा हमें हमेशा प्राप्त होती रही। हमारे जो पार्टिसिपेंट्स थे इस पूरे सीरीज के दौरान, वो छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों के विभिन्न शैक्षिक सदस्यों के सदस्य, कोलंबिया कॉलेज रायपुर के स्टूडेंट और टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ रहा। हम पहले दिन की संक्षिप्त रिपोर्ट में आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। 16 अक्टूबर 2023 को कीनोट स्पीकर डॉक्टर रमेश चंद्र कोठारी, फॉर्मर वाइस चांसलर गुजरात यूनिवर्सिटी सूरत। आपका विषय था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ओवरव्यू। एनईपी 2020 के पृष्ठभूमि, विजन, मिशन सहित सभी चैप्टर्स पर प्रकाश डालते हुए आपने कहा कि स्कूल और कॉलेजेस इस तरह की रणनीति तय करें जिससे विद्यार्थियों में क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, साइंटिफिक टेम्परामेंट जैसे स्किल डेवलप हो। रिसर्च वर्क और भी अधिक साइंटिफिक हो। हम बच्चों के लिए या टीचर्स के लिए जो भी वेबिनार और सेमिनार का आयोजन करते हैं, उन्हें बड़ी कुशलता से करना चाहिए, उन्हें वक्त देना चाहिए जिससे कि उसके और अधिक सकारात्मक परिणाम हमें प्राप्त हो सके। आपने ग्रेडिंग सिस्टम और क्रेडिट सिस्टम और मूल्यों के संवर्धन पर भी जोर दिया। दूसरे दिन 17 अक्टूबर 2023 कीनोट स्पीकर प्रोफेसर M.A. खादर, प्रोफेसर NCERT न्यू दिल्ली। आपका विषय था क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इस सेशन की जो संक्षिप्त बिंदु हैं वो इस प्रकार हैं। कोठारी कमीशन 1964 के 10+2+3 के करिकुलर स्ट्रक्चर से आज हम 5+3+3+4 करिकुलर स्ट्रक्चर पर पहुंच गए। अर्ली लिटरेसी, अर्ली न्यूमरेसी पर एम्फेसिस करते हुए आपने क्वालिटी एजुकेशन की बात की। इसके लिए आपने कहा कि हमें कुशल और प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता होगी। करिकुलम को अगर ट्रांसफॉर्म करना है तो बच्चों की थॉट प्रोसेस को डेवलप करना होगा। हमें स्कूलों में, कॉलेजेस में विद्यार्थियों को ऐसे अवसर देने होंगे जिससे वे खोजबीन करके स्वयं सीख सके, उनके चिंतन को बढ़ावा मिले, क्योंकि बच्चे कभी फेल नहीं होते, फेल तो पूरा का पूरा सिस्टम होता है। इसलिए सिस्टम को पुख्ता बनना होगा। टीचर सिर्फ डिग्री होल्डर न बने, वह सब्जेक्ट एक्सपर्ट, चाइल्ड साइकोलॉजी का जानकार, सीखने सिखाने के तरीके और असेसमेंट की विभिन्न तकनीकों की जानकारी रखता हो। इसके लिए हमें टीचर एजुकेशन को बहुत ही ज्यादा पुख्ता बनाने की आवश्यकता है। तीसरे दिन 18 अक्टूबर 2023 को हमारे कीनोट स्पीकर रहे डॉक्टर तरुणा चौधरी ढाल, फॉर्मर प्रोफेसर इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग, ट्रेनिंग एंड रिसर्च, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र। आपका टॉपिक था NEP 2020 इज सस्टेनेबिलिटी अ बिहेवियरल पर्सपेक्टिव। आपका कहना था कि सस्टेनेबिलिटी के लिए हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस का सम्मान करना होगा। हम एक्टिव लिसनर बने, दूसरों के विचारों को सुने और समझे और फिर अपनी टिप्पणियां या अपने विचार प्रकट करें। हमें आई और मी से वी और अस तक जाना होगा, मैं और मेरे से हम और हमारे तक जाना होगा। सस्टेनेबिलिटी के लिए कोई थंब रूल नहीं है जो बता दिया जाए और उसका पालन कर लिया जाए। यह हमेशा और हमेशा डाइवर्सिटी का सम्मान करने से उत्पन्न होती है। हम अपने सराउंडिंग्स को देखें, जिम्मेदार पूर्ण व्यवहार करें, नई पीढ़ी को काबिल बनने में मदद करें। प्रत्येक सेशन के बाद प्रश्न उत्तर सेशन का आयोजन किया जाता रहा है और पार्टिसिपेंट इस सेशन में अपनी जिज्ञासा का समाधान पाते रहे हैं। आज हमारे इस सीरीज का अंतिम तो नहीं कहूंगी, लेकिन एक पड़ाव है जिस पर आज हम पहुंचे हैं। आज के हमारे कीनोट स्पीकर थे प्रोफेसर ऋषिकेश सेनापति, फॉर्मर डायरेक्टर NCERT न्यू दिल्ली। आपका टॉपिक था करिकुलम, पेडागोजी एंड असेसमेंट। आपने इसकी शुरुआती पृष्ठभूमि से अपना सत्र शुरू किया। राधा कृष्णन कमीशन, मुदलियार कमीशन, कोठारी कमीशन से होते हुए NCF 1975, 1980, 2000, 2005, 2022, 2023 की बात कही। आपने कहा कि हमारा जो विजन या हमारे
हमारे जो NEP का विजन है वो एक वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी का निर्माण करना है और इक्विटेबल वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी हमारे वसुधैव कुटुंबकम के ध्येय वाक्य पर आधारित है। देखा जा रहा है कि हम अपने ड्यूटीज के प्रति उदासीन हैं और राइट्स के प्रति, अधिकारों के प्रति जागरूक। इसे हमें उलट करना होगा। हम अपने ड्यूटीज के प्रति भी हम जागरूक रहें और अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक रहें। इसके लिए हमें अपने करिकुलम में इन सब को स्थान देना होगा। उन्होंने आगे कहा कि सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात ना करें, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करें। हम आर्ट, फिजिकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर जोर दें। स्कूल का कल्चर ऐसे बनाएं कि हर विद्यार्थी को उसमें अपनी छवि नजर आए। आपने स्पोर्ट और टॉय बेस्ड पेडागोजी की भी बात कही। उन्होंने कहा इन सभी का उपयोग यदि हम करेंगे तभी हमारी शिक्षा जो है वो आनंददायी बनेगी। आपने असेसमेंट की विभिन्न तकनीकों पर भी प्रकाश डाला। आपने कहा कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग के साथ साथ असेसमेंट एज लर्निंग भी होना चाहिए, जिससे बच्चे अपने आप को, अपनी लर्निंग को, अपने सीखने को खुद रिफ्लेक्ट कर सके, अपने बारे में वो खुद जान सके और आगे वो अपने सीखने के एक मजबूत आधार को तैयार कर सके। उन्होंने अफेक्टिव डोमेन पर जोर देने की बात कही और ये भी कहा हम ICT बेस्ड लर्निंग को ज्यादा स्थान दें। ये हमारे 4 दिन का सफर था और इस सफर के आधार पर हमने जो एक्शन पॉइंट बहुत जल्दबाजी में अभी हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, हम इसकी बहुत गहराई से स्टडी करेंगे, इसकी समझ करेंगे और एक नई रणनीति हम अपने कॉलेज के लिए, अपने इंस्टीट्यूशन के लिए तैयार करेंगे। हमारे जो एक्शन पॉइंट अभी हमने तैयार करें वो इस प्रकार है। हमें तैयार होना है टीचर के प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, उसकी योजना बनानी और ये नियमित अंतराल में हमें करना है, क्योंकि शिक्षा में बदलाव आते हैं और शिक्षा में नई चीजें जुड़ती हैं। इन सब के लिए हमें अपने टीचर्स को अवेयर करवाना है। हमें एक्टिव लिसनर बनना है। कक्षाओं में विद्यार्थियों को सक्रिय रखने के तरीके सीखने हैं हमें, क्योंकि हमें अपने बच्चों के विविध स्किल्स में यदि पुख्ता बनाना है तो उन्हें हमें अवसर देने होंगे। असेसमेंट के विभिन्न तरीकों को सीखना होगा, जिससे कि हमें ये पता चले कि हमारे बच्चे क्या क्या जानते हैं। हम असेसमेंट सिर्फ इसलिए नहीं करें कि हमारे बच्चे क्या नहीं जानते हैं, तो असेसमेंट की विविध तकनीकों से हमें परिचित होना होगा। किशोरों और बच्चों और युवाओं के मनोविज्ञान की जानकारी हासिल कर हमें क्लासरूम इंटरएक्शन की योजना बनानी होगी। बच्चों के फंडामेंटल ड्यूटीज के प्रति हमें सजग बनाना होगा। हम उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस करें और क्वालिटी एजुकेशन के लिए हमारे सारे के सारे प्रयास हों। हमारी कक्षाओं में आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, हमारे स्पोर्ट्स और टॉय के साथ जो हमारी पेडागोजीज है वो हमारे करिकुलम में प्रमुख स्थान ले। ये हमारे आगे के एक्शन पॉइंट्स हैं। अभी तक के सफर में हमें जिनका भी साथ मिला उनके हम हमेशा आभारी रहेंगे। शुक्रिया, बहुत आभार। एक बार फिर हम आभार प्रदर्शन की ओर चलते हैं। आज के हमारे लेक्चर सीरीज के मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव जी ने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। आपका मार्गदर्शन हमें मिला। आपके मार्गदर्शन में प्रगति की दिशा में बढ़ने में हमारी बहुत बहुत मदद करेगा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव जी की कि उन्होंने एक गहरी समझ, एक पुख्ता धरातल हमें प्रदान किया NEP 2020 के क्रियान्वयन करने में। आज के कीनोट स्पीकर प्रोफेसर ऋषिकेश सेनापति जी के हम आभारी हैं। आपने NEP 2020 करिकुलम, पेडागोजी, असेसमेंट जैसे महत्वपूर्ण विषयों को बड़ी ही सरलता के साथ प्रस्तुत किया। आपका यह सेशन हमें NEP के विभिन्न प्रावधानों को जानने, समझने, अपने करिकुलम और पेडागोजी को प्रासंगिक बनाने में बहुत बहुत मदद करेगा और हम अपने क्लासरूम इंटरैक्शंस को बेहतर तरीके से संचालित करने में सक्षम होंगे। आपका बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। हम शुक्रिया अदा करते हैं जन प्रगति एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी आदरणीय श्री हरजीत सिंह हुरा के। आप इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हमारे साथ बने रहे। हमेशा की तरह आपकी उपस्थिति हमारा हौसला है और आपका साथ हमारी प्रेरणा। जी माइक कौन है?
इस कार्यक्रम NEP 2020 के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए 4 दिन की एक बृहद रूपरेखा तैयार की थी। हमारे विभाग के प्रमुख डॉक्टर अरुण दुबे जी ने न सिर्फ उन्होंने कल्पना की, उसे वास्तविक स्वरूप भी प्रदान किया। आपके कुशल नेतृत्व में हम ये उपलब्धि हासिल कर सके, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम के दिन प्रतिदिन की पुख्ता और पूर्व तैयारी करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया वाइस प्रिंसिपल आदरणीय डॉक्टर आभा दुबे जी ने। उनकी सजग निगाहों ने प्रत्येक कार्यक्रम पर नजर रखी और टीम के प्रत्येक सदस्य को आवश्यकता अनुसार सहायता पहुंचाई और टीम भावना को कायम रखकर आपने इस कार्यक्रम को बहुत सफल बनाया। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार मैम आपका। हम आभारी हैं विभिन्न राज्यों के सदस्यों के साथ जो निरंतर हमारे साथ जुड़े रहे, हमें रोज बरोज फीडबैक प्रदान करते रहे, प्रश्न करते रहे और इसने हमें और अपनी समझ को पुख्ता बनाने में, बेहतर बनाने में और आगे NEP के प्रावधानों को क्रियान्वयन करने में हमारी बहुत मदद करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके अमूल्य और अनमोल समय हमारे हिस्से में आए, हम आभारी हैं आपके। हम बड़े ही स्नेह के साथ शुक्रिया अदा करते हैं अपने प्रिय छात्र अध्यापकों का, जिन्होंने अपनी उपस्थिति से, अपने जुड़ाव से, अपनी सक्रियता से इस कार्यक्रम को अपनी मंजिल तक पहुंचाया। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। Thank you so much, ma'am. It's a very such a informative session today. We'll definitely implement all those things that you have suggested us, sir. Thank you so much, sir. With your permission, shall we end the meeting, sir? Sir. Excuse me, sir. Hello? Sir, if you permit us, can we end the session? Yes. Yes, sir. Thank you so much, sir, for coming. Thank you. Thank you. Pranam. Thank you so much, sir. Thank you. Pranam. Pranam.